Hi Bosco, how are you? I am good, Vaishnavi. How are you? Yeah, I'm good too. We have some questions for you today. Shall we begin? Yes, please. Yes. So, what's your favorite game, Bosco? My favorite game, it's Minecraft. I am playing it since last 2 months, and yeah, I'm almost getting addicted to it. Acha. So, what's the favorite part in that game? The favorite part, I'll say, the Minecraft world is so beautiful, and it feels like you are in some other world, and there's so much to explore. You can explore things. You'll find some animals, you'll even find zombies, monsters, you'll find caves, and that's the main part of it, that you have to go inside the cave, mine it, you have to find stuff, collect raw materials, then you can combine those materials to create new another materials, tools, etc. You can do farming, you can do a lot of things basically. And when I go home, after getting fresh and everything, I just sit in front of my iPad and just start playing Minecraft, and it feels very soothing to me. Nice. So, we'll head to the next question. Mhm. So, which tool or software do you feel is the best for game development? I won't say best as such, but it comes down to each and every developer's own preference. For me, I use Unity game engine along with Rider for code editing, and these two tools are enough for me to begin with my game development. And I'll say Rider is a paid software. It requires a license, but nowadays you can also use it for free if you are working on non-commercial project. But it's worth it. It's worth it. It's an amazing piece of software which I love to use. Okay. So, what's the most challenging project you worked on game development? The most challenging project, I can't think of anything specific. However, I will do say that during the initial phase of my career, I had to integrate payment systems into the game, payment systems, ads, etc. And that was quite challenging back then. Nowadays, the SDKs and third-party libraries are way too easy to begin with, and there are a lot of documentation available, especially for the Unity. So yeah, so nowadays it is very easy process, but back in those days it was very quite difficult to integrate something to test with, and you can't mess with it because the revenue is dependent on Any advice for someone just starting out in game development? it. So my advice to the new game developers is that आप अगर कोई भी गेम डेवलपमेंट चालू कर रहे हो, शुरू शुरू में बहुत फन रहता है, मजा आता है, लाइक कुछ तो नया कर रहे हैं, मजा आ रहा है, बट आफ्टर अ वाइल जब गेम कंप्लीट होने आता है, लाइक देन रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है, हम ज्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं, हमें और उसमें कंटेंट ऐड करना है, और एट द सेम टाइम ज्यादा फंक्शनलिटी ऐड करनी है, फिर उस प्रोसेस में हमारा जो कोड बेस है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. तो I'll say that whenever you are starting any project, first study the project, understand the project, its requirement, its goals, and you first design your own base architecture of the game, the core of the game, and then you start building on top of it. Don't just directly rush into making the game. मेरी एडवाइस ये मेरा एडवाइस है कि एक अपना कोड बेस है उसको हमेशा स्केलेबल रखो. So, to become a developer, should they have any degree or anything like that? No, no, absolutely not. Uh, Game development एक ऐसा प्रोफेशन है, like you don't, I'll say you don't have to get any professional degree or something. आजकल इंटरनेट पे सब अवेलेबल है. आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो हाउ टू डू गेम डेवलपमेंट इन यूनिटी, आपको 100 से भी ज्यादा ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जो फ्रॉम स्क्रैच गेम बनाना आपको सिखाएंगे, फ्रॉम जीरो टू हीरो, लिटरली. Along with that, the only requirement in game development is that you should have a passion. So initial learning curve बहुत steep होता है, बहुत जन
ग्लैमर की वजह से आ जाते हैं, गेम डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, बट आफ्टर अ व्हाइल दे रियलाइज इट्स नॉट दैट इजी एज इट वाज they felt. But if you have a passion to do it, you are doing it for your own enjoyment, then yeah, you can definitely uh, at least finish quite few games. And I'll say that just stick to your original vision and follow your passion. Okay. Can you suggest any software for the beginner? Software, I will say, start with the Unity game engine. Search for Unity game development tutorials. Is it free? Yes, Unity game engine is free. All the tools required for game development, most of the tools are free, at least for a learning purpose. Unless or until you are making money out of it, they won't charge you a penny. Okay. So, what challenge you faced working on a game that people might not expect? Okay, so might not expect. So initially क्या होता है कि गेम हमें बनाना है, हमें ग्राफिक्स बहुत अच्छा चाहिए, स्मूथ चाहिए, लाइक 4K ग्राफिक्स, 8K ग्राफिक्स, व्हाटएवर. तो इन दैट प्रोसेस हम बहुत हाई रेजोल्यूशन टेक्सचर यूज करेंगे, एसेट यूज करेंगे. गेम अच्छा दिखेगा बट ऑन योर सिस्टम. जैसे ही गेम को हम बाकी नॉर्मल एंड्रॉइड फोन में डिप्लॉय करेंगे या तो ब्राउजर में डिप्लॉय करेंगे, उस टाइम पे गेम लैग करना चालू करेगा या तो क्रैश भी हो सकता है. सो you should remember what is the target device that you are working for and accordingly keep that in mind कि मेरा मेरा मेमोरी बजट इतना ही है तो मेरे एसेट्स इतने हाई डेफिनेशन होने नहीं चाहिए. अगर होंगे भी तो क्या ये मेरा जो डिवाइस है उतना resolution support भी देता है. So accordingly you have to plan it and then move with it. Okay. So have you faced any difficulty in your team? And also how many members are there in your team who is working with you? My team, as such, I'll say for now, the kind of project I'm working on, वो तो मैं अकेला ही करता हूँ मोस्टली. बाकी जो मेरा अनदर टीम है जो सिर्फ गेम के अपडेट्स देखता है, उसमें 2 डेवलपर्स हैं जिनको मैं गाइडेंस देता हूँ, टेक्निकल असिस्टेंस देता हूँ. बाकी वो अपना कर लेते फिगर आउट. अच्छा. Do you monitor their work? I kind of not. मेरा अप्रोच ऐसा है कि उनको बस टारगेट देना है एंड दे शुड फिगर आउट कि कब करना है, कैसे करना है. अगर वो किसी टेक्निकल, अगर उन्हें हेल्प चाहिए कि कहाँ पर अटक गए, कि गेम का परफॉर्मेंस और बूस्ट नहीं हो रहा है, ऑप्टिमाइज नहीं हो रहा है, या तो गेम क्रैश हो रहा है या तो लैग हो रहा है, एंड इवन आफ्टर डूइंग सो मच रिसर्च अगर फिर भी उनसे नहीं सॉल्व हो रहा है, देन they approach to me and then I intervene and basically I figure it out. Okay. So your last question is, what do you think the next big trend in gaming will be? So the next big trend in gaming, I'll say, will be personalized gaming, meaning each and every game will adapt itself according to users behavior. कि हम जैसा गेम खेल रहे हैं, जैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जैसे डिफिकल्टी हम कैसे अडेप्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से गेम का एआई अपने आप ही खुद को मॉडिफाई करते जाएगा एंड इट विल गिव बेसिकली अ टेलर्ड एक्सपीरियंस टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. काइंड ऑफ लाइक जैसे मेरा इंस्टाग्राम का फीड और आपका इंस्टाग्राम का फीड कभी मैच नहीं करेगा, बिकॉज इट इज अप टू माई ओन प्रेफरेंस. कुछ कंटेंट मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, कुछ मुझे बोरिंग लगेगा. वो एआई समझ लेता है बिहेवियर को और उसके हिसाब से मेरा फीड वो अपडेट करेगा. सेम विल हैपन इन गेम. अभी आपने एआई का मेंशन किया, कैन वी नो मोर अबाउट दैट? सो एआई के बारे में आपको जानना है, वेल उसके लिए तो हमें अनदर एपिसोड बनाना पड़ेगा. श्योर. ओके.